ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज एमएससी थर्ड सेमेस्टर के पेपर 12 जो कि साइटोजेनेटिक्स का पेपर है, उसमें एक टॉपिक है हेटेरोक्रोमेटिन एंड द यूक्रोमेटिन। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। द टर्म heterochromatin and euchromatin was coined by Emil Hedges in 1928. एमिल हेड्स ने 1928 में सबसे पहले हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन टर्म्स को यूज़ किया था। फ्यू सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम और द एंटायर क्रोमोसोम्स आर मोर कंडेंस्ड देन द अदर कैरियोटाइप ड्यूरिंग द सेल साइकिल। सच डिफरेंस इन थिकनिंग इज कॉल्ड हेटेरोपिक्नोसिस। हेटेरोपिक्नोसिस एक फिनोमेनन है जिसमें क्रोमोसोम की जो कंडेंस्ड जो स्टेज होती है उसमें जो थिकनिंग में डिफरेंस होता है, उस फिनोमेनन को हम हेटेरोपिक्नोसिस कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल इज ऑफ टू टाइप्स, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। At prophase stage, when chromosomes are stained with stains like acetocarmine or fuelgen, a linear differentiation into regions having dark stain and light stain becomes conspicuous. प्रोफेज स्टेज में जब क्रोमोसोम्स को एसिटोकार्मिन या किसी और स्टेन से हम स्टेन करते हैं तो एक लीनियर फैशन में एक डिफ्रेंशिएशन आता है डार्क स्टेन में और लाइट स्टेन में, एंड दिस डिफरेंस इज वेरी कॉन्स्पिक्यूअस। द डार्क स्टेन रीजन्स आर कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिक एंड लाइट रीजन्स आर कॉल्ड यूक्रोमेटिक। द रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम्स दैट अपीयर रिलेटिवली कंडेंस्ड, जो ज़्यादा संघनित होते हैं, जो वो क्षेत्र क्रोमोसोम के जो ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं, एंड they are deeply stained with DNA specific strains, they are heterochromatin. It is tightly packed form of DNA. Heterochromatin जो है, it is tightly packed form of DNA. It is of two types, constitutive heterochromatin and facultative heterochromatin. Both of the constitutive heterochromatin and facultative heterochromatin, they play a significant role in the expression of genes. Heterochromatins are transcriptionally inactive. Facultative heterochromatin is the result of genes that are silenced through a mechanism such as histone methylation or siRNA through RNAi. Constitutive heterochromatin is also called satellite DNA and it is highly repetitive. Heterochromatin is consists of short identical gene DNA which are repeated 1,000 times. These genes can replicate but do not transcribe messenger RNA for protein synthesis. Heterochromatic regions are constituted into three structures, namely chromomeres, chromocenters, and knobs. Chromomeres are regular features of all prophase chromosomes, but their number, size, distribution, and arrangements are specific for a particular species. Chromocenters are heterochromatic regions which are near the centromeres in proximal regions of chromosome arms. The third part is knobs. Knobs are spherical heterochromatin bodies which may have diameter equal to the chromosome width. Knobs are valuable chromosomal markers for distinguishing chromosomes of related species. In maize, very distinct chromosome knobs can be observed at Pachytene stage. Next is euchromatin. Euchromatin is the lightly packed form of chromatin.
It is rich in gene concentration. It is transcriptionally active, unlike heterochromatin. It is comprised of the most active portion. Euchromatin comprises the most active portion of the genome within the nucleus. The structure of euchromatin is reminiscent of an unfolded set of beads represent nucleosomes. Nucleosomes consist of 8 proteins known as histones with approximately 147 base pairs of DNA wound around them. In euchromatin, the wrapping is loose so that the raw DNA may be accessed. The basic structure of euchromatin is as an elongated microfibril as seen by electron microscopy. Euchromatin participates in the active transpiration of DNA to messenger RNA products. Here we see the difference between the euchromatin and the heterochromatin in one slide. This is euchromatin and here heterochromatin, which is of two types, constitutive heterochromatin and intercalary or the facultative heterochromatin. Stage of replication, euchromatin अर्ली स्टेज ऑफ एस फेज. इस फेज में यूक्रोमेटिन में रेप्लिकेशन होता है. हेटेरोक्रोमेटिन एंड ऑफ एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है. सेम इज विद फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन. इसमें भी एस फेज की एंड में रेप्लिकेशन होता है. स्टेन यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन होते हैं. दे आर स्टेन डीपली. लोकेशंस, ये क्रोमोसोम आर्म में होता है यूक्रोमेटिन एंड constitutive heterochromatin is usually in centromeric region and intercalary heterochromatin is in chromosome arms. During interphase, euchromatin is generally decondensed or the dispersed, whereas both type of heterochromatin they are condensed. If we talk about the euchromatin and heterochromatin in relation to the chromosomes, euchromatin are interchromeric, whereas heterochromatin or constitutive heterochromatin is centromeric chromosomes and the facultative heterochromatic is intercalary chromosomes. See, this picture is showing, this is the telomere portion. It is the end of the chromosome. This is the centromere portion. Again, it is the telomere portion. Euchromatin AC, and this is the heterochromatin, where chromosomes are deeply condensed. Here chromosomes are loosely condensed, less condensed, sorry. यहाँ पर हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के डिफरेंट रीजन में जो क्रोमेटिन पाया जाता है उसके बारे में. टीलोमियर, ये भी क्रोमोसोम का एक पार्ट है. सेंट्रोमियर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द chromosome. Secondary constriction, satellite, and the secondary constriction 1, secondary constriction 2. Telomere, this portion of the chromosome, it contains heterochromatin. Centromere, it also contains heterochromatin, which is of two type, alpha type and beta type. Secondary constriction, first ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजम है, यूक्रोमेटिन होता है. Secondary constriction second में is consist of euchromatin. This is also consist of euchromatin. Secondary constriction first and the secondary constriction second, both are consist of euchromatin. Satellite जो होता है part of the chromosome, that is
that contains heterochromatin. This is all about the euchromatin and the heterochromatin. Thank you.